Okay, Ji, today we are going to start with the new topic that is finite state automaton. That is, in fact, a finite state machine with the help of which we are going to study about certain transitions. Transitions means to move from one stage to another state. Okay? And how that transition is going to take place. Every transition is always going to take its action or its place upon some input, right? Whenever a certain input is provided to a system, then that system is going to switch from one state to another state. Giving you a very simple example, in case of a switch, how many states you can expect? Just two states, on state or off state, right? Similarly, any other machine that is going to do certain jobs, or it is going to do certain functionalities, all those functionalities are associated with some inputs. That is, the machinery is going to behave in a certain pattern or in a certain manner upon the existence of a certain input. That is, for such and such input, it is going to give you such and such output, right? So whenever we talk about the finite state automaton, then it consists of five objects. Mainly it consists of five objects. It consists of five objects. And what these objects are, in fact, number one, a set I of inputs. Number two, a set S, which is a set of states. The automaton can be in that any one of the states is going to adopt. And number three, a state S naught, mostly denoted by S naught, which is called initial state. Number four, a designated set of states, which are also called accepting states. Accepting states. You can also call those as intermediate states, right? And finally, final state. That is, in fact, the final output or the final state where the whole machinery is going to end, giving you the required result, right? So the final state is mostly marked with a certain pattern that I'm going to tell you earlier. So five main objects that are going to build up a finite state automaton, which is in short known as FSA, right? First one is the set of inputs. How many number of inputs? Yani number of inputs means what is the different possibility or what are the different possibilities the inputs are going to have, right? That is, for example, if we take a case of a switch, then it is just going to have either one or zero, right? That is, it is going to work on only two inputs. But there may be certain machineries or mechanisms where they are going to take a variety of inputs. And against every input, they are going to behave in a certain manner. Second one is a set S of states. That is, number of states
on which a system can switch. ठीक है? And these states are other than the initial and the final state, right? Keep this thing in mind that whenever we are going to talk about the intermediate states, these are separated from the other set. Then a state S naught, which is called the initial state. That is the very first step from where the system is going to start. It is going to kick up, or it is going to start its operation or its mechanism, right? And a designated set of states, which is called accepting states, where from which it is going to jump from one end to an other. And finally, the last state where the system is going to end, or it is going to reach its desired output, right? So starting with a very simple example, first I'm going to write the uh, pattern of an FSA in a tabular form. Tabular form means in the form of a table, and second one is the graphical form, where you are going to represent it, making use of some terminologies and symbols. Now at इन जनरल one क्या end, कहेंगे हम एफएसए वगैरह को? इन sorry, जनरल काम क्या है मैम? इन जनरल ये स्विचेस के लिए यूज होते हैं, ये क्या चीज़ है? ये किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं. आपकी कोई भी मशीन, फैक्टोरियल से क्या मुराद मैम? पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में. ओके, एक डिफाइंड पैटर्न है. एक्चुअली आप लोगों ने अभी तक डीएलडी में नहीं पढ़ा, वरना आपको ये चीज बड़ी सिंपल लगती. वहां पे आप पढ़ेंगे दैट इज मूर मॉडल एंड मीले मॉडल. ठीक है ना, सिक्वेंशियल सर्किट्स के अगेंस्ट में आपने अभी यस शायद मैम, पढ़े होंगे वो. वहां पे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच करता है. वहां पर आपको नंबर ऑफ इनपुट्स के अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना. जैसे अगर 2 बिट इनपुट थी, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज या आउटपुट्स 4 हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन 4 हो सकती हैं. If you are having a 3-bit system, then number of possibilities are 8. तो यहाँ पर हम यही चीज को देखते हैं कि अगेंस्ट सर्टन इनपुट्स अगर ये स्टेट्स हैं, तो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है. जिस तरह मोस्टली जब सिस्टम्स हार्डवेयर के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं, तो उसकी पहले फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना होता है. सो in order to understand that functionality, a standard way of giving a picture of the functionality that a certain system is going to perform, that is given with the help of FSA, right? तो मैं यस बस एक मैम, सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको चीज मजीद क्लियर हो जाएगी. ऑन वन साइड वी हैव स्टेट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक जो एग्जाम्पल आपके सामने कोट कर रही हूँ, दैट इज हैविंग 3 स्टेट्स, एस नॉट, एस वन एंड एस टू, right? The system is going to mingle, it is going to switch, it is going to work in just 3 states. वो इन्हीं 3 states में rotate करेगा. ठीक. At the top end we are going to write the inputs, a combination of inputs. वो क्या क्या हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, whatever it is. ठीक. Taking a very simple example where I have only 2 inputs, that is input is either 0 or the input is either 1. ठीक. अब मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को. पॉसिबल स्टेट्स, दीज आर द पॉसिबल स्टेट्स. जैसा मैंने बोला था ना कि एफएसए के अंदर आपके 5 मेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, अ सेट ऑफ स्टेट्स. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसमें सिस्टम स्विच कर सकता है. तो इस गिवन एग्जांपल में आई हैव ओनली 3 स्टेट्स, एस नॉट, एस वन एंड एस टू. एंड the system is going to jump on any of these 3 states upon some input. क्योंकि दुनिया का कोई भी सिस्टम उस वक्त तक ट्रिगर नहीं करता, उस वक्त तक ऑपरेशनल नहीं होता, unless and until it is being given with some input. Input is the one that is going to kick up a system, right? So how many possibilities of inputs are here? Just 2 possibilities. Either the input is 0 or the input is 1. Now the question is that how the system is going to behave if the input is 0, how the system is going to behave when the input is 1, again being at a particular state. ठीक. अच्छा, अभी मैं आपके सामने जरा इसको फिल अप करी.
फिर मैं आपको बताती हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू रीड इट, हम उस ग्राफ को इसको टेबुलर फॉर्म में रीड कैसे करते हैं. से हियर दिस इज S1, then S0, S1, S2, S1 and S0, right? Say we are given with this functionality that against certain input 0 and a certain input 1, these are the states on which a, the system is going to switch from the current state. ठीक. अब इसको बहुत गौर से देखिएगा और इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि मैं अब इसी फॉर्म को टेबुलर फॉर्म को देखते हुए इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करूँ. ठीक. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्टेट्स. हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स आर देयर? 3 पॉसिबल स्टेट्स. स्टेट को ड्रॉ करने के लिए वी आर ऑलवेज गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ सर्कल. ठीक है. नो रेक्टेंगल, नॉट एनी अदर आर्बिट्ररी शेप. A certain circle is going to represent a state. Okay, so for states we are going to make use of a circle. बेटा माइक म्यूट कर दें, डिस्टॉर्शन आ रही है. And in order to represent the inputs, we are inputs along with the transition. Transition का क्या मतलब है? Moving from one state to another. Switching जो हो रही है. Transition means movement. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना. Right? So ट्रांजिशन किसके अगेंस्ट होगी? डेफिनेटली किसी इनपुट के अगेंस्ट होगी. सो द ट्रांजिशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो लाइन. ठीक है. और एरो लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करी होगी कि आपने किस स्टेट से किस स्टेट पे मूव किया है. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्टेट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्टेट, एंड यू आर गोइंग टू स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट. किस इनपुट के अगेंस्ट, वो इनपुट आप इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे. इनपुट 0 थी तो ये ट्रांजिशन हुई, इनपुट 1 थी तो कोई और ट्रांजिशन हुई होगी. एंड नॉट नेसेसरली इनपुट्स आर गोइंग टू बी जस्ट 0 और 1, दे कैन बी एनी अदर थिंग. सो a general pattern of representing or building up an FSA is first making the states or representing the states with the help of circles. Then we are going to mark or we are going to show the transitions with the help of arrow lines. And with those arrow lines, we are going to associate the input that against which input that transition has taken place. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछे, so that I should move forward in order to draw the diagram. Okay ji. So 3 states here. I'm going to draw 3 circles. बेटा अगर मीटिंग एंड हो तो प्लीज रीजॉइन कर लीजिएगा. टास्क विल प्रोसीड टिल 9:30. सो 3 स्टेट्स S0, S1 and S2, right? Out of this, S0 is basically is your initial state, इसको हम ये भी कह सकते हैं. ठीक है. एंड S2 is basically the final state भी कहा जा सकता है अगर इसके अंदर इस तरह का सिस्टम बना हुआ है. ओके जी. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दोज ट्रांजिशंस? बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव. How to read the first line? First line को read करिए. Which state you are standing at? मैम इनिशियल स्टेट. Initial state S0 पे आप stand करें. ठीक है. S0 पे stand करते हुए while being at the state S0, if we have the input 0, then it is going to switch to state क्या लिखा हुआ है? S1, right? कैसे read करना है मैं दोबारा repeat कर रही हूँ. This is my present state. आप इसको यूँ समझ लें कि ये present state की बात है. While standing at state S0, यानी मेरी ये current position है, if I have the input 0, then my next state is S1. Again, with the present state S0, that is standing at S0,
if the input is 1, then the next state is S नॉट, यानी वो वहीं पे ही स्टे करेगा. ठीक. अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज ट्रांजिशंस ग्राफिकली. एस नॉट पे स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है. इनपुट अगर 0 आई तो कहाँ वो स्विच कर रहा है, कहाँ लैंड कर रहा है? S1 पे. सो एस नॉट से एक एरो जाएगा S1 पे अगेंस्ट इनपुट 0. ठीक. S naught is going to move, or it is going to remain at S naught if the input is 1. So an arrow is going to revert back to the same state with an input 1. Is it clear so far? यस मैम. नहीं समझ आया? अभी पूछें. मैंने अभी जस्ट एक स्टेट की ट्रांजिशन आपके सामने ड्रॉ किया. ओके जी. Let's move on to the very next state. That is, work of S naught is finished. We have represented both possibilities because we have given with two inputs only. So against every possible input, what will be the transition? You people have represented it, right? Now my present state, current state is S1. That is while standing at S1. While standing at S1, if my input is 0, then the very next state is S1. That is, it is going to stay here if the input is 0, right? And S1 is going to switch to S2 if the input is 1. So how to represent it? S1 is going to switch to S2 if the input is 1. Is it clear? यस मैम. Okay. How to draw the final transition while being standing at S2? That is my current state, or the present state is S2. S2 upon the input 0, it is going to move to S1. So S2 is going to point to S1 upon the input 0, right? And S2 is going to switch to S0 upon the input 1. So an arrow from S2 till S0 with an input 1. This is the whole diagram for the given tabular form of the finite state machine. मैम इसमें जो हर इनपुट के अगेंस्ट हमने जो स्टेट्स लिखी हुई हैं, ये डिफाइंड बाय डिफॉल्ट होती हैं, क्या चीज़ होती है? ये गिवन होती ये है. गिवन होगा. हाँ, कोई एक चीज गिवन होगी. ठीक. अच्छा, फर्स्ट करें, अगर वी आर नॉट गिवन विद दिस टेबल, वी आर गिवन विद द डायग्राम. ये डायग्राम आपके सामने है. कैन यू ड्रॉ द टेबल विद द हेल्प ऑफ इट? यस मैम. डेफिनेटली वी कैन हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स. आप स्टेट्स रिप्रेजेंट कर देंगे by counting the number of circles, right? That is S0, S1 and S2. Then you are going to see that what pattern of inputs you are going to have against the arrow lines. I'm able to see only just two possibilities here. That is either 0 or 1, right? So the inputs की possibilities क्या होगी? 0 या 1. Then with the help of these arrow lines, how they are moving, how they are pointing from one state to another state, I can fill up the table. That is, while standing at S0, if my input is 0, then next state is very clear, that is S1. If my input is 1, then the next state is the same state, that is S0. Similarly, while standing at S1, with the input 0, same state, with input 1, S2. While standing at S2, with input 0, next state is S1. With input 1, next state is S2. Clear? यस मैम. Okay, why we call it finite state machine?
मैम स्टेट्स जो है वो फाइनाइट नंबर में, यानी 3 ही स्टेट्स दी हुई हैं, इसके अलावा नहीं क्या करें Here the होते। number of states are in fact finite. S1 and here S naught, S2, S naught, S3, and finally S3, S naught, and S3. This is in fact the initial state, and this one is the final state. Keep one thing in mind that in some FSAs, we are not going to have a final state. In fact, it is going to have such mechanism that is, it is maybe just moving back to the first state, right? So mostly the final state is being represented with a circle that has a double outline, right? So this is a symbol for a final state. And initial state and all the intermediate states, they are just represented by simple circles that we. All of you, please note down the statement. A vending machine dispenses a piece of candy that cost 20 cents. The machine accepts two inputs, nickel or dime, and does not give any change. Here, nickel means 5 cents, dimes means 10 cents. As soon as the as soon as the amount deposited equals or exceeds 20 cents, the machine releases a piece of candy. And the next coin deposited starts the process again. So the scenario at hand is that we have to draw a state diagram against a vending machine that is going to give you some product, say it is a candy, and the cost or price of that candy or product is basically 20 cents. That is, the user has to deposit an amount of 20 cents. After that, he or she is going to have the product. Now, the possibilities of entering the amount or money is, we have two possibilities here, that is two type of coins here. One is nickel, the second one is dime. Nickel means 5 cents, coin of 5 cents, and dime means a coin of 10 cents. And giving a certain combination of nickels and dime, we have to go for a total of 20 cents in order to get the candy. Second thing, that is the machine is not going to give you any change. That is, if the amount exceeds 20, say we have 25 or say 30, then definitely it is not going to give you back the money, right? So let's start with the state table here. Let me write the possible states, and here comes the inputs, right? So what possible states I can have is the very initial I'm showing state. you.
सॉरी मैम दो ही होंगी, या तो निकल होगा या तो डाइम। जी जी, इनपुट्स दो होंगी, निकल होगा या डाइम होगा। ठीक है, मैं स्टेट्स की बात कर रही हूँ। एक आपकी इनिशियल स्टेट है, जब आपने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, तो उस टाइम पे आपकी अमाउंट है 0 सेंट्स। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, 15 cents, and finally to get the product or the candy, that is 20 cents or more than 20 cents, because a machine is such that it is not going to give you the change, it is not going to return you back the money. So either we get 20 cents or we get more than 20 cents, we are eventually going to have the candy, right? So number possible inputs two hai, that is nickel, जिसको मैं n लिख रही हूँ, एंड डाइम, डी इज फॉर डाइम। ठीक, और यहाँ मैं लिख देती हूँ निकल मीन्स 5 cents, and by entering dime it means we have deposited 10 cents। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब बहुत केयरफुली इस चीज को देखिएगा, कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द मशीन। मैं एक एक स्टेट के अकॉर्डिंगली, दैट इज while standing at state 0, 5, 10, 15 or 20, upon entering nickel, upon entering dime, what will be my next state? ठीक है, उसके उस चीज को अपने माइंड में रखते हुए देखिएगा कि टेबल कैसे फिल अप हो रहा है। while standing at state 0, that is initial state, the very initial state when the user haven't deposit anything, कुछ भी deposit नहीं हुआ, neither nickel nor dime, right? While standing at 0 cent states, if the user enters nickel, then at which state it is going to jump? मैम 0 से 5 की तरफ। 5, because your total is going to be 5। 5. So the next state is going to be 5 cents. Let me change the color. Okay? So it is basically going to move to 5 cents, because standing at 0 and having an input of 5 cents, total is going to be 5. Now again, standing at 0 cents and having a input of dime, at which state it is going to jump? 15 तो ना 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 ना, हाँ, इसको कंफ्यूज नहीं करना बेटा। यू आर स्टैंडिंग एट स्टेट 0 और दोनों इनपुट्स इंडिपेंडेंट हैं। आप एक वक्त में एक ही कॉइन डिपॉजिट करें ना, ठीक है, इधर निकल और डाइम। सो व्हाइल स्टैंडिंग एट स्टेट 0, if you enter a dime, that is a coin of 10 cents, which state it is going to jump? मैम 10 10 सेंट। cents। 10 cents. Very good. Clear? Okay जी। Now again, states को भी independently आपने देखना है। We are standing at state 5. Now our present state is state 5 and initially we were at state 0, right? So if we are standing at state 5, that is state 5 पे हम कब पहुंच सकते हैं? Whenever we have an amount of 5 cents, that made us to move to the state 5, right? So if we are standing at 5 cent states and the user enters a nickel, then where it is going to jump? 10 cents। 10 cents. And while standing at the state 5 cents, if the user enters a dime, 15 cents। very good, 15 cents. Again, now our present state or current state is 10 cents. If the user enters a nickel, then 15। very good. And while standing at 10 cents, if a user enters a dime, 20 cents। very good. Okay, ji. What about 15 cents? मैम 20 cents। 20 cents. And here, 25। but we don't have any state with the name 25. तो मैम 20 और मोर, तो फिर वो हाँ, जो एक 20 ही। और मोर है, इनफैक्ट 20 स्टेट इज अवर फाइनल स्टेट,
जो कि हमारी टारगेटेड स्टेट है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि देयर इज एन इनिशियल स्टेट एंड देयर इज अ फाइनल स्टेट, राइट, जिसको हम डबल सर्कल से डिनोट करते हैं. सो व्हाइल स्टैंडिंग एट 15 सेंट्स with an input of dime, the total is going to be 25. But since the machine is not going to give us a change, so it is going to remain at the 20-cent state, which is the final state. And upon reaching that state, you are going to get the output, right? Now, what about 20 cents or more? While स्टेट पे standing तो at 20 पैसे cents or more. इस सेंस पे इस पे तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें ऑलरेडी कैंडी दे देते. हाँ ना बेटा, जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी उसकी लास्ट लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. The next coin deposited starts the process again. The very next line of the तो मैम statement. फिर ये जीरो पे हो जाएगा, फिर ये जीरो पे हो जाएगा. दोबारा सोचें. देखें, once you have reached 20 cents, ठीक है ना, अब आपकी इनिशियल स्टेट ये है. पहले तो आप इनिशियल स्टेट 0 थी, 5 थी, 10 थी, 15 थी, ठीक है. उसके ऊपर जो जो इनपुट्स आए उसके अकॉर्डिंगली आपने जंप किया. Now your present or current state is 20 cents. While standing at 20 cents, it means you have got the product. Agreed? यस. आप 20 cents की आपकी प्रेजेंट स्टेट बनी कब होगी? जब आप उस तक पहुंच चुके होंगे ना. एंड डेफिनेटली अपॉन रीचिंग द 20 cent states, you have got your product, you have got the candy. Now, once you have reached 20 cents, if a user enters a nickel, just think over it. Where should it switch? Ma'am, 5. Because keeping in mind that you have to start the process again. जी बेटा, आपने क्या बोला? 5. Very good. Because you have to start the process again. And अब देखिए 20 सेंट्स पे आप पहुंच गए हैं, प्रोसेस दोबारा से शुरू हो रहा है, तो आपने समझ लिया कि बिल्कुल स्टार्ट हो गया ना. और स्टार्ट के ऊपर रहते हुए आपने अगर 5 सेंट्स एंटर किया तो डेफिनेटली वो आपका स्टार्ट यहाँ से लेगा, 5 सेंट्स पे आपको मूव कर देगा. And again standing at 20 cents and having a dime. And Again 5. No, not 5. 10 ma'am, 10. 10 cents. Is the last point clear? Yes. Or should I repeat it? Yes, ma'am. Clear है? मैम एक बार रिपीट कर दें. ओके जी. देखिए, इसमें जो पंच लाइन थी, that was your last line. That is the next coin deposited starts the process again. अभी हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, that will make things more clear. Once you have reached 20 cents, and upon reaching the 20 cents, if a user again enters an input, if the user is not going to enter any input, definitely it is going to stay at 20 cents. It is not going to do anything else. Upon reaching 20 cent states, if a user enters a nickel, it means he or she has entered a coin of 5 cents, then your amount, your next current amount is going to be 5 cents. That is why you are switching to 5 cent states, right? Again, while standing at 20 cent states, if a user enters a enters a dime, that is a coin of 20 cents, it means now the deposited amount is 10 cents. That is why it is going to jump to 10 cents. ताकि आपका process दोबारा से initialize हो जाए. You can take it like that. Upon reaching 20 cents, okay, I'm starting with the diagram. So first of all, with the help of circles, we are going to draw all the possible states. That is state 1, that is 0 cents. आप चाहें तो इसका नाम S1 भी रख सकते हैं. This is up to you, right? Then state 5 cents, another state 10 cents, next one is 15 cents, and the final state is 20 cents, right? Okay, now the inputs and the transitions. While standing at 0 cents, if the user enters nickel, then it is going to switch to state 5 cents. 5. Input is N. N का मतलब है nickel. Nickel enter हुआ था. ठीक?
While standing at 0 state, upon entering a dime, we are going to switch to ये आपने 20 के 10 20 cents. के ऊपर 2 सर्कल क्यों लगाए? Because this is the final state that is giving you the output. Product यहाँ पे पहुंचने के बाद मिल रहा है ना आपको. So the final designated state is denoted by a double circle. Okay. Right? Okay, ji. Now with the present state 5 cents, if the user enters a nickel, it is going to move to state 10 cents. And if the user enters dime, then it is going to move to 15 cents. Right? While standing at state 10, upon entering a nickel, it is going to move to 15 cents. Sorry, यहाँ पे मैंने cents नहीं लिखा. Okay. And whilst standing at 10 cents, upon entering a dime, total is going to be 20. So 20 cents. Right? Again, at 15 cents, if one enters a nickel, then it is going to move 20 cents. And upon entering a dime, since it is not giving you the change, so it is going to move here. What I do for the next state upon reaching 20 cents? मैम 20 से 5 वाले में आएंगे. Very good. If once upon reaching the 20 cent states, if one enters a nickel, then it is going to move to 5 cents. And if one enters a dime, then it is going to move to this state. This is the final finite state automaton for the vending machine. Is it clear to all? Okay, is it clear so far? Yes. Yes, Okay, ma'am. next question, that is design a FSA with inputs 0 or 1 that accepts the set of all strings for which the final 3 input symbols are 1. Okay, ji, what we have to do is, that is we have to design a finite state machine that is again accepting 2 types of inputs, either 0 or 1. Everyone is getting me? Yes, ma'am. Okay. Okay, either 0 or 1, and it is going to accept the set of strings. Set of strings means a bit stream that is a combination of zeros and ones. Arbitrary bits आपके पास आ रही हैं, कोई भी उसमें 0 1 का combination हो सकता है. But you are going to reach the final state, that is your given set of string is being accepted, for which the final 3 input symbols are 1. Let me give you an example here. For example, you have a combination 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1.
this combination is going to have triple one in the last 3 bits combination, right? Another combination that can be of any bit length, say this one, it is not going to be accepted. Why? Because the last 3 bits are not triple one, rather it is 0 1. So other than that, it can be 0 1 0 0 0 1 1 0 0 or any other combination. The only that string of bits will be accepted that is going to have a triple one in the last 3 bits. Okay? Before that, whatever is a combination, we are not going to care about. Is this scenario clear? यस मैम Okay, ji. मैं So, जस्ट इस स्टेटमेंट के लिए ना जी, for the given statement that I wrote previously, right? So we are going to design a diagram for it, keeping in mind that we have to strive for a triple one at the end, right? Okay, ji. Initially, FTA का क्या मतलब है? sorry, मैम FTA का क्या मतलब है? आपने लिखा था ना क्वेश्चन में डिजाइन में FTA. FSA लिखा था मैंने. That मैम is क्या मतलब है? finite state automaton. ये जो हम डायग्राम बनाते हैं ना, that is having, that is going to have finite states and that is going to represent some machinery or a system that is called FSA finite state automaton, जिसके बारे में लास्ट टाइम आपको सारे पॉइंट्स वगैरह सब डिक्टेट करवाया था. ओके. Okay ji. Arbitrary we can't think of that how many states it is going to have. So let's start with the procedure and think about it step by step upon the reaching a point there where we are going to finish up our FSA and we are going to have the final state, right? So let's start with the first initial state, say S naught, right? Initial state है हमारी, and while standing at any state, the possibilities of input is just two, either 0 or 1, right? What I'm striving for is that a triple one. For example, आपकी कोई भी bit stream आई, उसकी length ही सिर्फ ये है triple one, तो क्या आप final state पे reach कर जाएंगे? Have you got my question? No, ma'am. देखिए, अगर आपने इनपुट लेंथ के ऊपर तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना कि 10 बिट्स होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना. योर टारगेट इज दैट कि आपके पास जितनी भी लेंथ की बिट स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, उसमें जितनी मर्जी बिट्स हो, चाहे 3 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कितनी भी हो, उसकी लास्ट 3 बिट्स क्या होनी चाहिए? ट्रिपल वन होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने सेंड सिर्फ ट्रिपल वन किया तो क्या होगा? मैम वो फिनिश हो जाएगा. फिनिश हो जाएगा. आप अगेन ये भी आपके लिए एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग होगी, ऐसा ही है ना? अगर आपने सिर्फ ट्रिपल वन ही भेजा था, अगेन यू आर गोइंग टू रीच द फाइनल स्टेट. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट दीज टू कॉम्बिनेशंस आर डेफिनेटली एक्सेप्टेबल. एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस यस मैम. मैम बिल्कुल है, इसमें भी लास्ट 3 बिट्स वन आई है. क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम. है. क्या ये एक्सेप्टेबल है? नो मैम नो, No. नो. क्योंकि यहाँ ट्रिपल वन आया ही नहीं है. आपने भेजी ही 3 बिट्स थी और तीनों में से एक बिट क्या है? 0. 0 ठीक. अब ये चीज बहुत गौर से देखिएगा, हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं, हमारा टारगेट सिर्फ ये है, ये 3 वंस लाना किसी तरह. उससे पहले जो आया था वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट इट कि वो क्या था. अपॉन गेटिंग जस्ट 3 वंस वी आर गोइंग टू रीच द फाइनल स्टेट. ठीक. एस नॉट पे रहते हुए अगर 0 आ जाता है, व्हाट इट शुड डू? हम दोनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे, इधर वी आर गोइंग टू हैव अ 0 और वी आर गोइंग टू हैव अ 1.
S नॉट में 1 ऐड करना है, फिर 1 देखें, जब तक आपको एक 1 नहीं मिलता, यानी S1 की बात करी, जब तक एक 1 नहीं मिलता तो कोई चांस ही नहीं है ना कि आपको आपके पास 111 हो सकता है। 111 आने की उम्मीद कब जागेगी? जब एटलीस्ट आपको एक 1 तो मिले ना। एक 1 के बाद फिर एक और 1 मिल जाता है, वेरी गुड, फिर एक और 1 मिल जाता है, डन। लेकिन जब तक एक भी 1 नहीं आ रहा, यू आर नॉट गेटिंग द होप ऑफ गेटिंग अ 111। इज दैट सो? यस मैम। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो इट मीन्स while standing at state S naught and having a 0, we are not going to move forward. Rather, we are just going to wait here unless and until we get a 1. ये बात सबको समझ आई है? यस। ठीक है। And now standing at state S naught, if I may get a 1, then एक hope आई है कि we can get a 111. So upon getting a 1, I can move to another state, the next state, say S1. यहाँ तक समझ आ रहा है तो बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूं। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताएं स्टेट S1 पे पहुंचने के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए होगा? अभी तक जितनी मैंने डायग्राम बनाई, मुझे बताएं मैं स्टेट S1 पे कैसे पहुंचूंगी? क्या एंटर होगा कि मैं स्टेट S1 पे पहुंचूं? मैम जब 1 होगा ऑब्वियसली। सिर्फ 1 होगा? क्या 1 0 ये कॉम्बिनेशन मैम मुझे स्टेट 1 पे मैम नहीं 1 से पहले पहुंचाएगा? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्या ये कॉम्बिनेशन मुझे स्टेट S1 पे नहीं पहुंचाएगा? What about this combination? What about this मैम 1 से पहले combination? जितने मर्जी जीरो। जितने मर्जी जीरोस आते हैं, these all are going to move me to the state S1. ठीक? अच्छा, अब आगे चलते हैं। While यस मैम। standing at state S1, if I get a 0, यानी ये सब कुछ हो गया था, इसमें से कुछ भी हो गया था, मैं स्टेट S1 पे पहुंची, इसके बाद 0 आ गया। Where it should go? मैम कहीं पे भी Wait, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम कहीं पे भी नीचे है तो अपने ऊपर ही रहे। यहीं पे रहेगा। 1 1 1 तो अब और क्या काम आएगा? देखें, इसके बाद यानी एक 1 आने के बाद अगर 0 आ गया तो क्या 111 का चांस अभी भी मौजूद है? नो मैम, एंड पे नहीं है, वो आपका सीक्वेंस टूट गया। ऐसा ही है ना? देखें, यस यहाँ मैम। एक 1 पहुंचने के बाद आपको लाजमी अगला क्या चाहिए? 1 चाहिए, बिकॉज यू आर स्ट्राइविंग फॉर 3 कंसेक्यूटिव वंस। ठीक है? अब इस 0 के आने ने आपका सीक्वेंस तोड़ दिया। आपको दोबारा से इस 1 की सर्च करनी है, क्योंकि देखें इसके अगर 0 आ गया था तो उसके बाद फिर दोबारा एक 111 चाहिए एक्सेप्ट करवाने के लिए। जब तक कि अगला पहला 1 नहीं आएगा, यू कांट मूव फॉरवर्ड। हम आगे S1 पे तब आगे गए थे जब हमें एक 1 मिला था, एक उम्मीद थी कि अब अगला 1 आ भी सकता है। ठीक? वंस यू हैव रीच्ड S1 बट यू गेट अ 0, तो आपको दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, एंड अगेन यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 1। इज द पॉइंट क्लियर? यस ठीक। और इसी यस स्टेट पे मैम। रहते हुए अगर एक और 1 मिल गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने किया था, इसको छोड़ देते हैं, 0 0 मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। आई गेस 3 मिनट्स 4 मिनट्स रह गए। अच्छा, 0 0 1 था, एक और 1 आ गया। अब 0 नहीं आया, क्या आया? 1 आया। इज देयर अ होप फॉर हैविंग अ 111? यस यस मैम। मैम। बिल्कुल है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू मूव टू द very next state, that is say S2. How we are going to reach at S2? This combination is going to push me to S2. This combination is going to move me to S2. This combination is going to move me to S2, and again this is going to move me to S2. 0 1 0 0 फिर 1, कुछ भी आया, आखिर में जैसे ही 2 1s आए,
मैं किस स्टेट पे पहुंच रही हूँ, S2 पे। उससे पहले आपका ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, एनी बिट कॉम्बिनेशन, बट द लास्ट टू आर वंस। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। Anybody knows that? Can we get the previous slide here? What we have drawn? Okay.